Hello everyone, welcome to my channel Sangeeta's Fun Learn. Please like, comment and subscribe to my channel and also do share among your friends. Hey my dear cutie pies, how are you all doing? Doing good, no? Okay, so today we are going to learn a new topic, okay? And a new topic in English, okay? So do you want to know what is that new topic? Alright, let me tell you. Is E sound words. What's it? E sound words. Yes. Okay. Okay. So before going on to E sound words, let's revise what is the phonic sound of E. Alright. So मेरे पास कुछ चीजें हैं. I have some objects to with that. See, this is revision, okay? Ma'am has already told you many a times. So I have one egg. What is this? Egg, right? Yes, I have one egg. So it is starting with E. So egg. सबसे पहले मैंने क्या बोला? A, right? Egg. So this is egg starts with E. Here I have one cute elephant, right? A toy of elephant. You know what's his name? Sorry, her name. Her name is Ella. What's it? Ella. Yes. This also starts with E. E for elephant. Ella, the elephant. Right? So, Ella. Elephant. Alright. So, here is something. What is this? What we call this? This is my elbow. And elbow. This also starts with E. So I think all of you got what is the phonic sound of E? It's A, right? Yes, A. All right. आपके बुक में भी एक है पेज, ठीक है? So from that also you can find out objects that start with E. All right. So, okay. So the letters that we will learn today, in these letters you will find, आपको क्या मिलेगा? जो बीच का अल्फाबेट है ना, that will be E. Okay? इससे पहले जो हमने सीखा था उसमें बीच का अल्फाबेट क्या था? A. Right? So we call these CVC words also. Why do we call this CVC words? आपको याद है? मैम ने आपको एक बार बताया था, है ना? Because consonant, vowel and consonant, right? There is one consonant, again one consonant at the end, and in the middle there will be a vowel, right? So that's why we call this CVC words or three-letter words, because there are three letters. And also short sound of vowels, yes, or vowel sound words. And now since we will learn the words in which the middle alphabet is the letter E, that's why we call them E sound words also. Alright. तो सबसे पहले तो मैम आपके साथ रिवीजन करने वाला है, ठीक है? Do you remember this? Yes. What's this? See, ma'am wrote A. These are A to Z, right? The alphabets A to Z. And ma'am has written A, E, I, O and U in pink color and others in blue color. Why? Because A, E, I, O, U are vowels. Do you remember? Yes. Do you remember? Ma'am showed you like this. Yes. Today you are going to write these vowels in your fingers with pen
or sketch pen and send one picture to your ma'am. Okay, you need to write A-E-I-O-U in your hand, in your fingers, and you will send this picture. Okay, so what are these? A-E-I-O-U are vowels. Alright, so the vowel sound word that we will learn is today is E, है ना? So the middle vowel will be E. Okay, alright. So do you remember this one? जो मैम ने आपको बताया था B-A क्या होता था? बा. हम लोग मुंह को थोड़ा सा आ करके खोल देते हैं ना, बा. C-A was का. D-A was da. राइट, हम लोग क्या करते थे? मुंह को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा करके खोलते थे, है ना? नाउ आई विल शो यू writing all the alphabets with E, all the consonants along with E. तो उसका साउंड का कैसा चेंज होता है हम लोग देखते हैं. ऑल राइट, सो फर्स्ट वन इज B-E, राइट. सो नाउ B-A होता था तो हम लोग बा बोलते थे. करो करो, बा. यस, नाउ B-E वी आर गोइंग टू डू. मुंह जो है इतना बड़ा नहीं खुलेगा, थोड़ा कम खुलेगा. बे. क्या? बे. B-A बा and B-E बे. Okay, yes, so you're going to do this also. Okay, you're going to do this and you're going to send audio clip. Okay, C-E-K, D-E day, F-E fe, G-E gay, H-E hey, J-E J, K-E K, L-E le, M-E may, N-E nay, P-E pay, R-E ray, S-E say, D-E day, V-E way, W-E way, X-E say, Y-E yay, Z-E zay. But remember, this pronunciation works only for short sound of vowels. Okay, दूसरी यूज में ये चेंज भी हो सकता है, but for right now you need to remember this. Okay, so ये हो गया. अगर आप ये समझ लो ना, देन तो आपको स्पेलिंग लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. ठीक है, सो टुडे मैम विल give you only 5 words to learn, only 5, and this whole week we are going to practice this 5 words only. All right, so आप लोग ध्यान से सीखो, इसको कॉन्सेप्ट लेके सीखो, and I think you will remember this. Okay, so let's move on to the words. So children, the first word that I have, you all know it very well. You have already learnt it. Okay? आपको ये अच्छी तरह से पता है. This is nothing but a number name. आपने इसको already सीखा है. देखा कितना फायदा हुआ नंबर नेम लर्न करने का. अभी आपको एक ई साउंड वर्ड नहीं लर्न करना पड़ेगा, है ना? See, and can you guess what that number name is and what that spelling is? Yes, that is the spelling of 10, right? Yes, awesome, right? Yes. अरे ये तो मुझे पता ही है, इसको क्या लर्न करना है ना? फिर भी मैम बता रही है. T-E क्या होगा? टे, राइट? T-E टे, और उसके साथ न, टे न, 10. और ये तो आपको पता ही है ना? Alright, so the next word is P-E क्या होगा? पे, राइट? P-E पे, और उसके साथ न, पे न, pen. Yes, so here is a beautiful
picture of beautiful pen, right? Yes, and here is my pen, so I can write the spelling of pen with my pen. आपको याद है PAN? वो क्या होता था, कैसे होता था? पैन. तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना है और दिमाग लगा के उसको लर्न करना है. एंड दिस इज पेन, राइट? वो था पैन और ये है पेन. ऑलराइट, PEN, पेन. ओके, सो हियर इज आवर नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज NE. क्या होगा? बताओ बताओ बताओ. ने, राइट? NE, ने. एंड उसके साथ ट, नेट, नेट. यस, ने, नेट, नेट. एंड नेट मीन्स कोई भी जाली. ठीक है, ये तो नेट है, बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट पकड़ने वाली नेट है. ठीक उसी तरह से फिश पकड़ने वाली नेट होती है. फिर मच्छर नहीं आने के लिए हम क्या करते हैं? वी पुट मस्कीटो नेट्स, राइट? वो भी नेट होती है. और नेट की ड्रेसेस भी हम पहनते हैं. सो कोई भी जाली टाइप का जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं नेट. ऑलराइट, ओके. सो what is our next word? And that is read. Let's try to read this. Okay, PE, pay, right? PE, pay. And उसके साथ t, TT, t, right? Pay, t, pay, t, pay, t, pet, right? And pet मतलब जो एनिमल्स आप घर में पालते हो, है ना? जो एनिमल्स आपके घर में रहते हैं, आप उनको पालते हो. जैसे कि रैबिट्स होते हैं, कैट एंड देन डॉग. दीज ऑल आर पेट्स. डू यू हैव एनी पेट एट योर होम? इफ यू हैव देन टेल मी अबाउट इट. क्या पेट है? आप उसका पिक्चर बना दो. ठीक है, अगर आपके घर में कैट है तो यू कैन मेक कैट का पिक्चर. ठीक है, तो अगर डॉग है तो डॉग का पिक्चर बनाओ. ठीक है, जो भी पेट आपके पास है आज उसी का पिक्चर बनाओ कॉपी में. ऑलराइट, सो PET, पेट. ओके मम्मा, हियर इज समथिंग वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल. यस, एंड दिस इज HE. क्या होगा? हे. HE, हे. एंड उसके साथ न, है न, है न, hen. Yes, see, my hen has laid eggs. She has laid 1, 2, 3, 4. जो चिकन के जो लड़की होती है, ठीक है, लड़की को हम बोलते हैं hen. ओके, जो लड़का होता है उसको बोला जाता है कॉक. ऑलराइट, और उसका क्या होता है ना, यहाँ पे टेल में बहुत लंबे लंबे ऐसे फीडर्स होते हैं और यहाँ पे क्राउन जो होता है वो भी बहुत बड़ा होता है. और जो हेन होती है, हेन की क्राउन छोटी होती है और यहाँ टेल भी कम होता है. ठीक है, अगर हम लोगों का स्कूल खुलेगा और हम मिनी जू जाएंगे ना, तो आपको मैम दिखाएंगे कौन सा कॉक है और कौन सा हेन है. ठीक है, और हेन जो फीमेल चिकन होती है वो क्या करती है? अंडे देती है ना, एग्स देती है, क्योंकि ये ई साउंड वर्ड है और ई फॉर एग्स, तो ये एग्स देती है. राइट, यस, सो HEN, hen. All right, so let's see what are the words that we learned. So okay, from the beginning, सबसे पहला वाला ये तो हम लोगों को आता ही है, TEN, 10, right? The number name 10, spelling of number 10, TEN, 10. Then we learned about pen, है ना, PEN, pen, लिखने वाली पेन. Alright. Then हमने क्या सीखा उसके बाद? बटरफ्लाई पकड़ने वाली या कोई भी जाली, उसको क्या बोलते हैं हम? NET, नेट.
right? Yes. After that, we got to know about P-E-T, pet. And pet means जो घर में हम लोग पालते हैं, पालतू जानवर, उनको पेट बोला जाता है ना? Cats, dogs, rabbits, then और क्या क्या हो सकता है? एक्वेरियम में रहता है fish, right? All these are pet animals, okay? So after that we learned about hen. H-E-N, hen. और hen क्या करती है? Eggs lay करती है, right? Yes. So now you're going to write these 5 words in your copy, okay? And you are going to use a very sharp pencil. You tell your mama to draw the pictures. If you can draw it, then try to draw it, okay? So you will draw the pictures and write the spellings 3 times. How many times? 3 times, okay? And very neat and beautiful handwriting, alright? Just like my beautiful kids, okay? So enjoy learning. Have fun. Bye-bye. See you again. Love you all.